So those who are online, those who join the lecture on YouTube, just check the audio and the screen. Is it visible or not? If you know percentages, check the audio on screen visible or not, and just write in the chat box. Okay, just write in the chat box. It's starting in 2 minutes. Wait for a few students, then we'll start. Okay. So today we'll start with a new model. That is model number 3. Okay. So let's start the topic. Please wait for others. In the meantime, just एक बार check सबको ऑडियो और स्क्रीन दिख रहा है ठीक है इसको स्क्रीन ब्लर दिख रहा है देन एडजस्ट द रेजोल्यूशन ओके 144 244 whatever it is 360 620 so make it at 480 720 तक लेके जाओ so you will see the screen properly okay चलो so join immediately we'll start the lecture So just check the audio and video. The screen is visible or not. We'll start the lecture. Okay. So today we'll start with a new topic. So one presented, let's shake Ayush, Saurabh, do the meeting. You have the paper now. Saurabh, do the meeting. Ayush Kashif, it's for the same two, okay? So Ayush, Rohit, Omkar, Videsh, Rohit, Mukund, Saish, Aditya Tiwari, Om Khanvilkar, Mukund, Mandar, Lakshmikant, Krishna, Rachit, and Gaurav, Samriddhi. Let's start the lecture. थोड़ा wait करते because we are starting a new topic ना. So कोई सोया होगा तो उसको उठाओ. Okay? We are starting a new topic and we are going to directly jump on the sums. Directly sums लेने वाले आज. ठीक है? So उनको थोड़ा कोई सो गया तो उसको उठाओ. चलो उठ जाओ. Lecture अभी ना हो गया. ठीक है? Were they also there? So today we'll start with the new topic. That topic name is three-phase circuit. Okay, this topic is very important. Simple, within 2-3 lecture you get over. Okay, but it's not part of the syllabus. Okay, exam is just model 2. जितना हमने exam में series RC तक पढ़ा था उतनी ही. This lecture is not part of the unit test 1. Okay, so this model number 3. It's a model number 3, three-phase circuit. जब तक हमने सम्स देखे थे ना दैट इज बेस्ड ऑन सिंगल फेज सर्किट क्योंकि वहां पे एक ही वोल्टेज था और एक ही करंट था ओके व्हाट आर मींस आइदर देयर इज वन वोल्टेज और आइदर देयर इज वन करंट ऐसा था ना अगर सीरीज में होगा तो वन करंट तो पैरेलल में होगा तो वन वोल्टेज ओके ऐसा था मींस इट्स अ सिंगल फेज so today we'll start the three phase circuit we'll directly jump onto the sums so theory we'll take in the next lecture because once we complete the sums now it will be more easier so कोई background noise होगा from my side तो उसको थोड़ा छोड़ दो just थोड़ा construction work is going on which background noise होगा तो उसको छोड़ो we'll start the lecture okay sharp 9:05 we'll start the lecture okay Sarah also there Mira also there So let's start with the three-phase circuit. See what is the basic difference between three-phase and single-phase. Let's see. सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंगल फेज और थ्री फेज क्या बेसिक डिफरेंस है. सिंगल फेज मतलब क्या होता है कि देयर इज ओनली वन वोल्टेज. इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. क्योंकि ऐसे दिखा that is once known as single phase. One matlab single and it's a phi matlab phase na. This is known as a phase. This is a phi pronounced as a phi and it is called as a phase. And three phase matlab they have three voltages.
उसका थ्योरी बाद में नहीं, जस्ट इंट्रोड्यूस द बेसिक. तो 3 वोल्टेजेस होते हैं वहां पे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 5. सो 3 is a 3 and 5 is a phase. Okay, that is the basic difference between single phase circuit and 3 phase circuit. ठीक है, इतना पता चला कि सिंगल फेज मतलब सेकंड मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज एसी सर्किट. जो हमने एसी सर्किट लिया उसमें जो कुछ भी था ना, ये इट इज सिंगल फेज. 3 फेज मतलब देयर आर 3 वोल्टेजेस, VR, VY एंड VB. तो देखेंगे बात में. सो बेसिक कंसेप्ट पता चला क्या है सिंगल फेज एंड 3 फेज में. जो मॉड्यूल 2 में हमने स्टडी किया एसी सर्किट के अंदर, दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट वन फेज सिंगल फेज. जो हम यहाँ पे देखने होंगे दैट इज 3 फेज. सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है. तो 3 फेज मतलब देयर आर 3 वोल्टेजेस, VR, VY एंड VB. ओके, थ्योरी बाद में नहीं. Would you directly go to the sums? Now the 3-phase circuit, there are 2 types. Before going through types, we'll go for some points. In a 3-phase circuit, there are 3 voltages. Okay, 3 voltages, and that is VR, VY, and VB. But there are 2 types of voltages. 2 types of voltages. The first one is known as a VPH, the second is a VL. And same 2 types of current. And same 2 types of current. IPH and IL. Okay. So मैंने क्या बोला, there are 3 voltages, VR, VY and VB. And हर एक इसमें there are 2 types, 2 type of voltages and 2 type of current. Now VPH, PH should be in a suffix. So what is a PH? It's a phase voltage. It's a phase voltage. VL, L is a suffix. L मतलब it's a line voltage. IPH मतलब it's a phase current. And IL मतलब it's a line current. ठीक है. So मैंने क्या बताया अब तक, in a 3-phase circuit there are 3 voltages, VR, VY and VB. And हर किस में 2 type of voltages, VPH and VL. So VPH is a phase voltage, VL is a line voltage. 2 type of currents, IPH and IL. IPH is a phase current and IL is a line current. Now unit is same. यहाँ पे unit same. What is the unit of voltage? That is a volt. And what is the unit? Unit is ampere. That is capital M. This is capital B. This unit is the same. This is just a type. So 3-phase circuit, there are how many voltages? 3. VR, VY and VB. And what are the types of voltages? VPH and VL. Phase voltage, line voltage. What are the type of current? Phase current and line current. Okay? Just go through this one. Just go through. Okay? So if you have any doubt, you can just ask me. Okay? Else in the chat box, you can write VPH, or we can say basic is clear. If कुछ doubt नहीं होगा, you can write in the chat box that the basic is clear. Okay? Sure. Simple. So today we'll complete all the sums based on the 3-phase. Okay? इतना simple sums. Very easy. सिर्फ कैलसी हाथ में चाहिए सबके पास. Okay? And you should have a proper notebook. So इराफ होगा तो भी चलेगा right now. बाद में फिर में convert करो. So just take a pen and pencil and the calcium. Okay? Yeah. So 3-phase circuit, 3 voltage, VR, VY and VB. 2 type of voltage, VPH and VL. VPH is a phase voltage, VL is a line voltage. 2 type of current, IPH and IL, phase current and line current. Okay? यहाँ तक देखिए. कुछ भी doubt होगा तो पूछो. Else in the chat box, just write basic is clear. Okay? Sure. So Parampoli says no doubt. Basic is clear. Vidyesh also says Atya, Rahul, Mayor, Harshvardhan, Tanishq, Saish, Sarah, Sunjara, Omkar, Samruddhi, Ayush Kashid. So others you can also write in the chat box. चलो बेटा. बस इतने बेसिक सम्स है, इतने इजी सम है कि इजीली सॉल्व. लेकिन जिन्होंने मॉडल 2 अच्छे से पढ़ा है दे कैन ओनली सॉल्व. तो जिनको डाउट है दे कैन डायरेक्टली राइट योर डाउट इन द चैट बॉक्स. एल्स कुछ डाउट नहीं तो जस्ट राइट बेसिक इज.
याद रखो VPH VN and IPH I. PH मतलब phase, L मतलब line, बस. And I is current, VN is voltage. चलो, no doubt, sure, कुछ भी डाउट नहीं, पक्का, चलो. Now in the three-phase circuit, there are two types of network. In the three-phase circuit, there are two types of network. So let's see which type of कौन-कौन से network होते हैं देखते हैं. Actually, three-phase circuit कैसे दिखता है, क्या होता है? We'll see in the theory part. We just introducing the sum. Sums के लिए जितना required. There are two types of network. Network मतलब क्या होता है? Connection of component. So what are the components we are using? Resistor, inductor, capacitor, then supply, wires. It's a combination that is known as a network. Okay, this is known as a network. There are two types of network. The first one is known as a star, and second is known as a delta. Okay, there are two types of network in a three-phase circuit. कौन-कौन से? Star and delta. Now what is a star? Star कैसे दिखता है? So this is known as a star. There is a center point. 1, 2, three-phase circuit. There are three lines. This is known as a star. Okay, this is known as a star network. What is a delta? This is known as delta. See, first point, second point, and third. So this is also first point, second point, third point. We can write here R, Y, and B. This is also R, Y, and B. So this is just उसका format है, उसका shape of star and delta. बाकी components मैंने अब तक join नहीं किया. And this is known as a neutral point. This is known as a neutral point. Because R, Y, B is so connect किया ना उसने, so this is one is a neutral. यहाँ पे there is no neutral point. यहाँ पे N is not present. You can write here. यहाँ पे no neutral point. No neutral point. Neutral point मतलब तीनों को join करने वाला कुछ भी point नहीं. यहाँ पे ऐसे neutral point नहीं है ना. It's upside. So in the delta there is no neutral point. In the star there is a neutral point which join all the three. R, Y, B. Okay. So there are two types of network in the three-phase circuit: star and delta. Star कैसे दिखता है? Like this. It's a reverse of Y. Okay. This is a reverse of Y. So this is Y. And this is a delta, or we can say it's a triangle. So delta is look like this one. So this is star. Star में क्या होता है? We have neutral point, and a delta we don't have a neutral point. Okay. चलो इतना देख लो. Then let's start with the formula based on the star and delta. अभी Mercedes क्या है? रिचित? अच्छा, Mercedes Benz का सिंबल. अच्छा समझा. अच्छा, गुड. अच्छा, Mercedes Benz का सिंबल उसने पकड़ा. गुड. So any doubt in the star and delta? Star कैसे दिखता है delta? बाकी उसका theory part we'll see in the next lecture. Okay. Today we just complete the sums. So that's very important. Done. So in the chat box you can write star and delta is clear. And then see the formulas. Just go through star and delta, and then start the sum. So in the chat box you can write star and delta is clear. Yeah. उसमें बताओ ना Mercedes. Just draw the circle and inside just draw the one. थोड़ी महाग गाड़ी कौन गला है? Like the finance में नहीं. Star and delta is clear, everyone. And then we'll see the formulas based on star and delta. So anyone in doubt? Just go through it. कुछ भी doubt होगा तो पूछो.
No one else in the chat box, just wait. Base star and delta is clear. Then we start the work. Chalo, sure, push it out to Uka. Chalo. So let's stay with the formulas. Now we'll see the formula. There are some formulas which are different for star and delta. There are some formulas which are same for the star and delta. Okay, which formula is same and which formula is different. So we'll see star and delta. We'll make a table. We can say parameter. So we'll make a table based on the star and delta. So let's say the first point. First point is a VL. Now what is a VL? VL is a line voltage, or you can say voltage. First parameter is voltage. So what is the parameter of voltage in this star and delta? Let's see. So voltage parameter is in the star. VL is equal to root 3 times. VL is equal to root 3 times VPH. मतलब अगर मुझे VL फाइंड आउट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई रूट 3 विद VPH. अगर VPH फाइंड आउट करना है तो ये रूट 3 नीचे जाएगा. It will be called denominator. So what is the first formula in the star? VL is equal to root 3 times VPH. VL is a line voltage and the VPH is a phase voltage. Okay. In a delta, VL and VPH both are same. Okay. This is just the first formula. Voltage का क्या relation है? In the star, VL is equal to root 3 times VPH, and delta is VL is equal to VPH. That is the first formula. Okay. याद रखना as it is. तो voltage हो गया. Then we'll go for the current. The second parameter is a current. So what is a current? Now here IL and IPH both are same. In the star both current are same. तो अगर मुझे IL फाइंड आउट करना है तो IL is same as IPH. और अगर मुझे IPH फाइंड आउट करना है तो IPH is same as IL. But here IL is equal to root 3 times IPH. That's the second formula. Okay. IL is equal to IPH, and here delta IL is equal to root 3 IPH. That is the second formula. सिर्फ ये दो फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी रिमेनिंग फॉर्मूला आर सेम. द रिमेनिंग फॉर्मूला आर सेम. ठीक है, बाकी जितने भी फॉर्मूला है वो सब सेम. द थर्ड वन इज द ZPH. देयर इज नो कॉल्ड ZL. ओके, स्टार एंड डेल्टा में देयर इज नो कॉल्ड ZL. लाइक यहाँ पे VPH एंड VL, IPH एंड IL. तो यहाँ पे सिर्फ ओनली वी हैव ZPH. वी डोंट हैव अ ZL. ओके, तो ZL नाम का कुछ भी कंसेप्ट नहीं. But there are three formula. First formula is we can find the ZPH by VPH by IPH. This is the first one. कैसे find out करना है? ZPH is equal to VPH upon IPH. Now this formula is the same in both the one. ZPH is equal to VPH divided by IPH. It's a basic Ohm's law. There is a one more formula. ZPH is equal to square root of R square plus XL square or R square plus XC square. ये भी फॉर्मूला में देखा था. So you can use any three. Same here. ZPH is equal to VPH upon IPH, or we can say ZPH is equal to square root of R square plus XL square and R square plus XC square. तो XL and XC सबको पता है. Okay, inductive reactance and inductive capacitive reactance. And Z क्या होता है? That is impedance. So you can write impedance.
इट इज अ टोटल रेजिस्टेंस ना, ठीक है। यहाँ तक कितना फॉर्मूला लिख लो, विल सी द नेक्स्ट वन, बाकी 3 फॉर्मूला देखेंगे। So any doubt in the ZPH and this one? Let's go through it. So what is the first parameter? That is the voltage. Voltage क्या है? VL is equal to √3 VPH. डेल्टा क्या है? इन डेल्टा VL is equal to VPH. तो डेल्टा में वोल्टेज सेम है, करंट स्टार में करंट इज सेम, बट डेल्टा में करंट इज IL is equal to √3 VPH. तो वी कैन से कि डेल्टा में वोल्टेज सेम है एंड स्टार में करंट सेम. बाकी व्हाट इज द रिलेशन? लाइन इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज. नाउ ZPH इज बोथ द सेम, दोनों जगह पे ZPH इज सेम, VPH upon IPH और square root of R square plus XL square, square root of R square plus X square. You can use any one, depend upon the given. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? So I can give the next one. चलो, तो जूम के यहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं होगा, इट्स सेम एज दिस वन. जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा सेम यहाँ पे, सेम. ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट फॉर्मूला. नाउ वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ पावर ना, मेरे पास 3 टाइप ऑफ पावर. सो लेट्स सी द पावर. So let's see the powers. तो you can combine this one. इन दोनों को combine करके एक भी लिख सकते हो. कैसे? बस I'm sure. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बिकॉज़ यहाँ पे मैंने कॉलम डिवाइड किया था, but you can make a combine also. कैसे combine करना है? This one like this. So next parameter is active power. It is capital P, na? So active power is a capital P. What is a unit? Unit is a watt, na? W, watt. So what is the formula of active power? Actual formula क्या है? V I cos pi, ना? What is the actual formula? V I cos pi. लेकिन यहाँ पे ये formula किसका है? Single phase का, ना? We are writing the formula for the 3 phase. So what are the changes here? तो changes क्या करना है? जहाँ पे single phase था वहाँ पे V I cos pi, यहाँ पे 3 phase है, तो what are the changes? So we have 3 phase, so that's why यहाँ पे 3 आएगा. V is replaced by VPH and I is replaced by IPH. That is the changes. So what are the changes? Let's write it once again. So in normal formula it's a VI cos pi. यहाँ पे 3 phase है, that's why we can write 3 VPH IPH cos pi. ठीक है, this is the first one. And दोनों में सेम है. मैंने यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया? Because स्टार एंड डेल्टा दोनों में सेम फॉर्मूला. P is equal to 3 VPH IPH cos pi. That is active power. Unit is W. ठीक है, दोनों जगह पे the formula is same. Let's see the next one. Second formula. किसका होगा? That is the reactive power. The second formula is reactive power. And that is capital Q, na? And what is the unit? Unit is VAR. So capital Q में क्या changes थे? VI sin pi, ना? Same changes. 3 VPH IPH sin pi. ठीक है? And then go for the last one. So what is the last one? That is the apparent power. It is a capital S. So apparent power. We can write same in the ZPH दोनों में combine था, तो we can write the same formula for both. Rather than writing the separate one, we can write S. What is a unit? Unit is a VA. So S is equal to क्या था? VI, ना? Only VI. We can write 3 VPH and IPH. खत्म. This PH in the suffix है, याद रखो suffix. मतलब कैसे R and PH ऐसे suffix में. So
So this formula is same with star and delta. कुछ भी आना तो star आना तो delta आना. The formula is the same. Okay. So what are the formula? What are these network? P, Q, and S and Z H. ये same सब जगह. It's the same as two-phase single phase circuit जो हमने delta इसमें देखा था model 2 में AC circuit में. सिर्फ क्या करना है? There is extra 3 because 3 phase इसके लिए 3 आएंगे. And V and I are replaced by VPH and IPH. Okay. Just go through it. If you have any doubt, you can ask me. Then we see our last formula, that is a power factor, and then we start with the sum. Instead, we'll see the last formula. Sure. Let's see the last one. The power factor. उसका last one देखते हैं, it is a power factor, and then we start with the sum number 1. तो बाकी erase नहीं करता हूँ, just power factor लिखता हूँ. So next is a power factor. It is a PF ना. So power factor क्या क्या formula है? That is a cos pi. और क्या क्या है? P by S. और क्या है? R by Z. और क्या है? VR upon V. These are the formula. यहाँ पे VR upon V use नहीं होगा because there is no called VR and V. Because there is a VR and V pitch ना, तो यहाँ पे VR upon V use नहीं होगा. So only this 3 formula used for. So what is the power factor? Cos pi or P by S or R by Z. These are the 3 formulas which are used for. And there is a no unit for the power factor. याद रखो, there is a no unit. So for the power factor, there is a no unit. देखो ना, R भी ओम है, Z भी ओम है, ओम get cancelled. P is also power, S also power, तो get cancelled. दोनों का unit same है, but it's a factor. Cos phi it's an angle, so there is no unit. So power factor, it's a factor of the same quantity, the ratio of the 2 same quantity. So that's why there is no unit. Okay, just go through it and push it out over the pucho else in the chat box. Just write. Difference is clear, or we can say formula is clear. तो क्या लिखो chat box में? Formulas is clear. The formula is clear. Just in chat box mention this statement. The formula is clear. We'll start the sum. Okay. So in the chat box you can write the formula is clear. And then we start with the actual sum. I'll solve 2 sum. Okay, and then I'll give the 2 homework. So in the next lecture onward, we'll start with the theory part. So एक बार sum हो गया मतलब we can likely start with the theory part. A simple topic है, within a 2-3 lecture you get solved. Which means nothing, simple. Because once you have the single phase, ना उसका सिर्फ comparison यहाँ. Done, everyone. Good. So Param, Rachit, Tushar, Aditya, Amol, Gaurav, Lakshmikant, Videsh, Saish, Manda, Meher, Harshvardhan, Krishna, Sarah, Samruddhi, everyone's good. Zanzara, Omkar, Ashwesha. So now, sure. Let's start with the sum and start with the sum. Just give me just 1 minute. I'll just take the sum. So थोड़ा screenshot लेता हूँ, so I can show you the sum directly. Just give me 1 moment. Do not leave the meeting. Just give me 1 minute. We'll start this. This sum is very easy. कुछ भी नहीं इसमें. Simple sums.
So let's start the screen share. मैं बताता हूँ कहाँ से लिया सब. So I think the classroom screen is visible to everyone. We'll go to the question paper. We'll start with the winter 2018. So winter 2028 का open करते हैं and let's see the question paper. उसमें से एक सम लेते हैं. So let's take one sum from the winter 2018. So this is the question. I'll just copy it and paste it. And what the question says, we need to find all these parameters. So let me just write it properly. So let's start with this one. So what is the question? The three impedances. So question क्या दिया? Let's see. So three impedances, each of 10 ohm resistance and 5 ohm inductive reactance is in series and are connected in the star across a three-phase 400 volt 50 hertz AC supply. Determine the phase current, phase voltage, line voltage, power factor, and total line power. Total line power मतलब कैपिटल. ठीक है. चलो अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सम सिंगल फेज का कि थ्री फेज का. So just go through the question and just tell me how to identify whether a model 2 का सम है कि model 3 का सम. Because यहाँ पे भी रेजिस्टर दिया है, यहाँ पे भी इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, यहाँ पे भी वोल्टेज दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ पे भी करंट फाइंड आउट करने को बोला है. So how to identify whether it is single phase or three phase? Just tell me. This was a chat box and just tell me कि how to identify कि ये single phase का सर्किट है कि three phase का सर्किट. Because same टाइप के सम हमने सॉल्व किए थे ना मॉडल 2. तो how to identify कि ये सम मॉडल 2 का है कि मॉडल 3 का है, सिंगल फेज है कि थ्री फेज. Just use a chat box and just tell me how to identify. कहाँ पे मेंशन किया है कि ये सिंगल फेज है कि थ्री फेज है? Anyone? Just go through it. मुझे बताओ कहाँ पे पता है it's a single phase or three phase. Let's see किसको आता है. सिंगल फेज का सर्किट है. श्योर सिंगल फेज है कि थ्री फेज है? ये क्वेश्चन सिंगल फेज है कि थ्री फेज है? जस्ट टेल मी आप कहाँ पे मेंशन किया. एनीवन? तो वही से सिंगल फेज का क्वेश्चन है. समवन विद थ्री फेज. सो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. जस्ट टेल मी कहाँ पे. सी अगर सिंगल फेज का क्वेश्चन होगा they will just write one phase और कुछ लिखा नहीं होगा तो इट इज सिंगल फेज. सी यहाँ पे लिखा हमने थ्री impedances, then star, then three phase, then phase line. ये क्या इंडिकेट करता है? दैट इज अ थ्री फेज सर्किट. उन्हें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए ना, तो थ्री impedances मतलब थ्री फेज. यहाँ पे भी मेंशन किया थ्री फेज. स्टार इन डेल्टा कहाँ पे देखा? थ्री फेज में. स्टार, फेज लाइन, ये सब क्या इंडिकेट करता है? इट्स अ थ्री फेज सर्किट.
ठीक है, श्योर, कुछ भी डाउट नहीं, पक्का, एवरीवन? या थ्री फेज सर्किट, गुड. So the three phase circuit. So let's write down the given. So यहाँ पे given 10 ohm का रेजिस्टेंस है, मतलब कैपिटल आर कितना होगा 10 ohm. Then 5 ohm inductive reactance. So what is inductive reactance? 5 ohm इसका वैल्यू, just use a chat box and just tell me 5 volt इसका वैल्यू. Then we have 400 का voltage and frequency is how much? 50 hertz. These are parameters. Just tell me what is 5 ohm and what is 400. 400 volt किसका वैल्यू? फेज वोल्टेज की लाइन वोल्टेज. एंड 5 ohm किसका वैल्यू? इट्स एक्सएल और एक्ससी की जेड. हाँ, ये सब जगह मैंने नोटेशन दैट इंडिकेट द थ्री फेज. यस, तो जस्ट ओनली 5 ohm किसका वैल्यू है? 5 ohm इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. मतलब क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस? बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज मतलब आर एक्सएल ना, आर एल सर्किट. सीरीज कनेक्टेड मतलब आर एल. सो एक्स 5 ohm किसका वैल्यू? 5 ohm इज वैल्यू ऑफ एक्सएल. यस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल ना. नाउ ये 400 वोल्ट ये किसका वैल्यू है? वी डोंट हैव अ वी. थ्री फेज में देयर इज नो कॉल्ड वी. यहाँ पे वीएल वीपीएच ऐसे दो कांसेप्ट. सो व्हेनेवर इट्स नॉट मेंशन कि ये वीएल है कि वीपीएच, अगर ऐसे डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं होगा देन इट्स ऑलवेज वीएल, लाइन वोल्टेज. क्या बोला मैंने फिर से कि इन थ्री फेज सर्किट अगर वोल्टेज मेंशन नहीं किया, इट्स अ स्टार फेज वोल्टेज की लाइन वोल्टेज, इसे स्पेसिफाई नहीं किया, इट्स अ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, देन इट्स ऑलवेज लाइन वोल्टेज. कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है देन इट्स ऑलवेज वीएल. It's always VL. So nothing is special, nothing is mentioned, then it's a VL. So what are the given? The resistance is 10 ohm, XL is a 5 ohm, VL is a 400 volt, and frequency is a 50 hertz. Okay? And then क्या क्या find out करना है? Let's make a list of 2 find. So मुझे क्या क्या find out करना है? 2 find. तो मुझे find out करना है phase current मतलब IPH, then line current मतलब IL, then phase voltage मतलब VPH, then line voltage VA, then power factor, then capital P. Total है. This is for the 6 mark. 6 mark का सम. मुझे IPH, IL, VPH, VL, power factor, capital. Total line power मतलब capital. इतना ही है. It's a capital. मुझे ये सब पैरामीटर फाइंड आउट करना. और जिसको पता है कि ये 400 वोल्ट VL है, उसको तो पता चल गया ना. VL भी फाइंड आउट करना. VL तो मिल गया डायरेक्टली. ओके, उसके बाद व्हाट इज अ गिवन नेटवर्क? क्या है? स्टार नेटवर्क है ना. सो दिस ऑल वैल्यू इंडिकेट टू द स्टार नेटवर्क. तो क्वेश्चन में अच्छे से देखो, स्टार की डेल्टा है, वहां पे मेंशन किया स्टार. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार? स्टार में वोल्टेज एंड करंट में क्या रिलेशन? ठीक है, जस्ट राइट डाउन द गिवन, जस्ट राइट डाउन 2 5. कुछ भी डाउट इन द क्वेश्चन जस्ट इन्फॉर्म. ओके, so just go through the question and push doubt over the पूछो. Else in the chat box just write given and 2 find is clear. So in the chat box you can write given and 2 find is clear. So कुछ भी doubt नहीं होगा, you can directly start with this. So in the chat box just write the given and 2 find is clear. So we'll start with the actual solution. We'll start with the solution. Yeah, given and 2 find is clear. Everyone, let's go through it. We'll start with the sum. Actual solution start. Star network के और ये सब given. Okay, तो simultaneously solve करो मेरे साथ. Use a calc. तो मुझे VPH and VL, IPH and IL, power factor and power P, capital P, ये सब find out करो. ठीक है, let's start.
So it's solution. So just tell me यहाँ पे क्या कौन सा सर्किट है? स्टार ना? So in star network, we can say directly. पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? We'll find here VL is equal to 400 volt. तो ये तो पता चल गया डायरेक्टली क्वेश्चन देख के कि VL is 400. Then VPH ना? So in star network क्या होता है? VL is equal to √3 times VPH. So what is the VPH? ये √3 नीचे शिफ्ट होगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा डिवीजन होगा. So VPH is equal to VL upon √3. So 400 divided by √3. Just use a calci and just tell me what is the answer. VPH is equal to how much? Just use a calci. Just tell me what is the VPH. VPH का वैल्यू कितना है? So use a calci. Just tell me. So आयुष ने फाइंड आउट किया. आयुष says VPH is a 230.94. चेक करो. आयुष का आंसर आ गया. Just tell me. Is it correct? Check करो. VPH is equal to. It's a correct 230.94 volt. So VPH and VL दोनों पता चल गया. Yeah, it's the correct. So always write a unit. सिर्फ वैल्यू में लिखूंगा 230.94 चलेगा. इसके अप्रॉक्स आया तो भी चलेगा. √3 का वैल्यू पता होना चाहिए 1.732 है. So 1.732 ये वैल्यू पता होना चाहिए. √2 is 1.414. ठीक है. √3 √2 ये वैल्यू पता होना चाहिए. देन मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है IL एंड IPH. लेकिन IL IPH कैसे फाइंड आउट करेंगे? IL भी पता नहीं, IPH भी पता नहीं. So what we require by the Ohm's law, ZPH पता होना चाहिए. So we should know what is the ZPH. लेकिन ZPH कैसे फाइंड आउट करेंगे? So we'll find the ZPH by using formula. ZPH is equal to square root of R square plus XL square. Because दोनों पता है ना. So what is the R square? What is the value of R? कितना था R का वैल्यू? मैं भूल गया. R is how much? Let's go through the question. So what is the value of Z? R कितना था? इस वैल्यू. जैसे नीचे I want to mention the value of R. या 230.93 भी चलेगा. Just find the ZPH. मुझे बता दो यहाँ पे R का वैल्यू कितना है. I think XL is a 5 square. But what is R? मैं भूल गया. R कितना था? बैक भी नहीं जा सकते ना. ये सब इरेज होगा. Just find the ZPH. Find out the ZPH. R is a 10. तो अर्षद ने बोला कि R is a 10. 10. ठीक है. Thank you. So 10 square plus 5 square. Okay. Use the calci. Just tell me the answer. What is the answer of Z square or ZPH? ZPH कितना है? Is it 11.18? ZPH is 11.18. Check करो. Yeah. जुंजारा इसको मिल गया 11.18. श्योर सबको ZPH आ गया. Anyone in doubt? So मुझे VPH पता है, ZPH पता है, तो I can find IPH by using ZPH is equal to VPH upon IPH. ठीक है. So let's find the IPH. IPH पता चल गया तो स्टार नेटवर्क में पता है that is IL is equal to IPH. You can find the IL also. Then power factor and then the power. खत्म. चलो तो let's go for the IPH as ZPH is equal to VPH upon IPH. ये तो पता है ना. So what is your IPH? IPH is VPH upon ZPH. So VPH कितना है? 230.94 ना. ZPH कितना है? 11.80. Just tell me what is IPH. चलो IPH कितना है? फाइंड आउट करो. ZPH हो गया सबका. Now just find the IPH.
And in a star network, IL is equal to IPH. Hence, whatever the value of IPH, same यहाँ पे copy paste करो for the IL. Just tell me what is IL and what is IPH. दोनों का value same ही हो. Because star network में दोनों same होते हैं ना. So find the IPH and then we'll go for the IL. Use a calcium. Just tell me what is IPH. खुद से solve करो. मेरा copy paste करूँगा. Yes, 20.65. Correct. चलेगा 20.65, 20.656. It's the same. यहाँ पे we can get the same answer. Okay, so 20.65. Because star network है ना, दोनों में same होता है. Star में IL and IPH both are same. ठीक है, मुझे 4 पैरामीटर्स मिल गए. Now just required power factor and power. तो मुझे IPH भी पता है 20.65. Star network है, so IL and IPH both are same. So we can get IL is equal to 20.65. खत्म. 4 मार्क तो मिल गए. Now we'll go for the power factor in the cos phi. ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं. पक्का? श्योर? No doubt in this point. Sure. Then we'll go for the power factor. So यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पावर फैक्टर का? जस्ट टेल मी. वी हैव 4 फॉर्मूलास ना, cos pi, p by s, r by z, vr upon b. इसमें से कौन सा यूज करना है? जस्ट टेल मी. cos pi, p by s, r by z और vr. Which value we know? कौन सा वाला पता है मुझे? So which one I will use to find the power factor? So use the chat box and just tell me which parameter we will use, which formula we will use. Cos r by z. Well, also he says cos and r by z. दोनों में से एक ही ना. Cos pi, p by s, r by z और vr upon r by z. I think Ayush ने दोनों combine किया it's now. Amol says correctly it is r by z. We'll use r by z because cos pi पता नहीं ना. p by s दोनों पता है. vr upon b ये तो कुछ concept ही नहीं इसमें. We find by r by z because we know both the value. So Ayush ने बराबर मत बोला लेकिन confuse किया उसको. Yeah. तो r by z सब लिख दिया. Yeah, second one. ठीक है. So what is r? R is a 10. What is z? 11.18 ना. चलो. So find the power factor. चलो. Immediately find the power factor and then we'll find total line power ना. So total line power, that is capital P only. ठीक है. क्या फॉर्मूला है? 3 VPH IPH cos pi. ये बात में देखते हैं. First find the power factor. So what is the value of power factor? Just tell me the answer. What is the value of power factor? क्या आंसर power factor से? So anyone with the answer of power factor? Yes, 0.89. Ayush ने मेरा बोला 0.894. At least 3 पॉइंट लिखो. तो यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं आ जाए. 0.894. उसके बाद we'll find the power. And what is the power? 3 VPH IPH cos pi. So 3 ठीक है. VPH is how much? भूल गया. It's a 230.94 ना. It's a 230.94. IPH कितना है? IPH is 20.65. Now what is the cos pi? How to find cos pi? VPH पता है, IPH पता है, लेकिन cos pi क्या है? So what is cos pi? Just tell me. Power factor पता चल गया 0.894. लेकिन यहाँ पे cos pi क्या लिखना है? What is cos pi? How to find cos pi? So anyone, any solution for this one? Cos pi कैसे find out?
मुझे पता ही नहीं कॉस पाई क्या है, मुझे तो आर बाय जेड पता है 0.89, कॉस पाई क्या है, हाउ टू फाइंड कॉस पाई? एनी सॉल्यूशन फॉर द कॉस पाई, कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉस पाई? क्या है यहाँ पे कॉस पाई? 0.89 नहीं, क्या 0.89 की? What is cos pi? Still the question is same. What is cos pi? Zero point nine nine eight. Couldn't cut now 0.998. और कुछ anyone? यहाँ पे cos pi क्या लिखूं मैं? 0.998 कहाँ से लाया हो? मुझे बताओ अभी सब लोग. I will say 0.89. See cos pi मतलब power factor ही ना? There are different formulas for the power factor. Cos pi r by z. Cos power factor easily find out करने के लिए we find r by z. What is r by z? It's a 0.894. Cos pi also same ना power factor. What is cos pi? It's a power factor and power factor कितना है? 0.894. So directly write the answer. समझा मैंने क्या बोला? It's a power factor only. Cos pi is a power factor. So directly write cos pi is how much? Cos pi is 0.894. And it's a different color. So you get idea कि यहाँ पे different color क्यों लिया? 0.894. ये कहाँ से आया? From here. Because cos pi is also power factor ना? पावर फैक्टर कितना है? दैट इज 0.894. तो 0.99 कहां से आया? समझा? इट्स आल्सो पावर फैक्टर. जस्ट डू द कैलसी, यूज द कैलसी एंड जस्ट कैन बी फाइंड आंसर. 3 230.94 and 20.65 0.894. ना cos by same as power factor. Just tell me the final answer. So 3 into 230.94 into 20.65 into 0.894. So what is the answer of power? So anyone with the answer of power? तो 99 कहां से है? मुझे पता नहीं चला. 0.99 कहां से? 120 12790, correct. 12790.21. Now what is the unit? Watt. मैंने बोला था जब पावर इज टू बिगर, जब पावर बहुत बड़ा होगा, that time what we use किलोवाट. इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं. सो किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विल शिफ्ट द पॉइंट बाय 3. ये पॉइंट यहाँ पे ना, विल शिफ्ट द पॉइंट 3 1 2 and 3, 3 से आगे शिफ्ट करेंगे. तो ये पॉइंट यहाँ पे इट विल गो फर्स्ट 0 9. सो 12.790 किलोवाट. बिकॉज किलो इज 10⁻³ ना. सो 3 से आगे शिफ्ट करेंगे. सो फर्स्ट 0 9 and 7, 3 से मैंने आगे शिफ्ट किया. इट्स 12.790 किलोवाट. So when the power is in thousands, 10,000, 20,000, 30,000, that time we convert into the kilowatt. So both are correct. नहीं किया तो भी चलेगा, but it's a safer side. Do it. So what is the power? Both the answer is correct. 12.790.21 watt kilowatt में convert करेंगे तो 3 point आगे shift करो. So 12.790 किलो. ठीक है? Just go through. Any doubt in the answer? Power. Just in the chat box mention sum number 1 is clear. उसके बाद I'll give the homework and in the next lecture we'll take one more. मैं एक homework देता हूँ आपको for the practice. The next lecture will start with the next sum. So immediately just tell me any doubt. कुछ doubt अगर पूछो. Else you can write sum number 1 is clear. You get the homework. ठीक है, no doubt. ठीक है, immediately I'll give the one homework because we have one more lecture उसके बाद. I'll give the homework directly.
तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट जो मैं समझने वाला, ट्राई द सॉल्व, ओके, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, दिस इज द सॉल्व। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं एंड देन सॉल्व। So, यहाँ पे बोला है बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम, 3 फेज बोला है ना, स्टार भी बोला है, ओके। कंसीडर 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ओम। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 ओम, एंड कनेक्टेड टू दी 400 वोल्ट। सो वीएल कितना है, 400 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सेल पिक्सल कुछ भी नहीं दिए, तो यहाँ पे एक्सेल इज नॉट देयर, एक्सेल भी नहीं दिए। सो विल कंसीडर दिस टू एज 0। सो व्हाट इज योर जेड, जेड इज आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर का स्क्वायर ना। So this parameter is 0. So what is your z? Z is equal as r squared plus square. Z is equal to r. Then find the phase voltage, line current, phase voltage, phase current, line current, and power consumed. Okay. So what are the given? R is 3 ohm, Will is 400, frequency 50 hertz. So यहाँ पे XL and XC दिया नहीं, that means it's 0. Okay. Sorry. Resistance का value कितना? 4 ohm, not 3 ohm. Sorry. यहाँ पे कितना दिया? 4 ohm. It's a 4. So resistance of 4 ohm. Okay. So try this sum as a homework. ठीक है, होमवर्क को सॉल्व करो, नहीं हुआ तो विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, द नेक्स्ट लेक्चर विल सॉल्व दिस। आई थिंक टुमारो होगा, तो आई थिंक टुमारो यू हैव एग्जाम, सो विल टेक, डोंट टेक टुमारो, बट सॉल्व दिस, ओके। नहीं हुआ तो आई विल टेक एंड सॉल्व दिस। यहाँ पे एक्सएल एक्सी दिया नहीं, कंसीडर दैट इट इज 0, ओनली आर इज, जेड इज इक्वल टू आर। कम वी ट्राई इन स्टार नेटवर्क, ओके। चलो, एनीवन इन डाउट, कुछ भी डाउट है? नो वन? चलो, सो आई विल टेक द अटेंडेंस एज पर द योर चैट बॉक्स में जितने लोगों ने कमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग विल गिव द अटेंडेंस। So no doubt, sure. Just write your name in the chat box and then you can leave the meeting. You can go for the next lecture. Okay? Just write your name in the chat box, then we'll stop. चलो बेटा। Power consumed ना, power consumed मतलब capital P. So what is the power consumed? It's a capital P. तो कुछ भी पावर दिया है बट पता नहीं व्हाट इज पावर। मैंने एक्टिव, रिएक्टिव एंड ऐप करने से कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, देन पावर कंज्यूम्ड इट्स कैपिटल। जस्ट राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स एंड देन विल स्टॉप। So all the best for the exam. For the exam, this model is not there. Okay, ये सब नहीं आने वाला एग्जाम, याद रखो। It's only model 2. जितने हमने सीरीज आरसी लेक्चर नंबर 9, वीडियो नंबर 9, उतना ही आने वाला। Okay, so make sure this is not part of the unit test 1. Unit test में ये नहीं आने वाला। So anyone in doubt, कुछ doubt हो तो specify करो, else you can go for the next lecture. But before we just write your name, accordingly I'll give the attendance. जितने लोगों ने कमेंट में एक्टिव थे चैट बॉक्स में, उनको so we'll stop here. We will meet on next lecture. जिनका बाकी they can go for next. Type it properly. Here लिखा हुआ। So done. वैसे we are on air ना। चलो done, सबका हुआ। And wait for 1 minute. You can go for the next lecture.